श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां सप्तत्रिंशोऽध्याये। ब्रह्मोवाच। वीरभद्रोऽथ युधे वे वै विष्णुना स महाबला संसमृत्य शङ्करं चिते सर्वापदिनिवारणम् आरुहासयनन्दं दिव्यं सर्ववैरिविमर्दना गृहीत्वा परमास्त्राणि सिंनादम् जगर्जः विष्णुशापी महाघोषं पाञ्चजन्याभिदं निजं दद्मो बली महाशङ्ख स्वकीयान् हर्ष्यन्निव तच्छ्रुत्वा शङ्खनिर्हादं देवा ये च पलायिता रणं हित्वा गता पूर्वं ते द्रुतं पुनराययु वीरभद्रगणैस्तेषां लोकपाला सवा युधा चक्रुस्तथा सिंहादं कृत्वा बलान्विता गणानां लोकपालानां द्वन्द्वयुद्धं भयावहम् अभवत्र तुमुलं गर्जतां सिंहनादता नन्दिना युयुधे शक्रो अन्नलो वै चाश्मना तथा कुबेरोऽपि कूष्माण्ड पतिना युयुधे बली तद्देन्द्रेण हतो नन्दी वज्रेण शतपर्वणा नन्दिना च हता शक्रस्त्रिशूलेन स्तनान्तरे बलिनो द्वापि प्रीत्या युयुधा ते परस्परं तानाघातानि कुर्वन्तो नन्दिशक्रो जिगीषया शक्तया जघान चाश्मानं शुचि परं कोपना सोऽपि शूले तं वेगा चितधारेण पावकं यमेन सह सङ्ग्रामं महालोको गणाग्रणी चकार तु मूलं वीरो महादेवं समन्मुदा नेत्रेण समागम्य चण्डक्ष बलवतर युयुधे परमास्त्रेक्ष नैरृतिं निविडम्बयन् वरुणेन समं वीरो मण्डक्षैव महाबला युयुधे परया शक्त्या त्रिलोकीं विस्मयन् वायुना च हतो भृङ्गी स्वास्त्रेण परमोजसा भृङ्गना च हतो वायुस्त्रिशूलेन प्रतापिना कुबेरेणैव संगमय कुशमाण्डपतिरादरात् युयुधे बलवान् वीरो ध्यात्वा हृदि महेश्वरं योगिनी चक्रसंयुक्तो भैरवीनायको महान् विदार्य देवान् खिल्लान् पपोषो नीतं दुतं क्षेत्रपालास्तथा तत्र बुभुक्षुसुरपुङ्गवान् काली चापि विदार्यैव तान् पपोरुदिरं बहु अथ विष्णुर्महातेजा युयुधे तैक्षशत्रुः चक्रं चिक्षेप वेगेन दहन्येव दिशो दशा क्षेत्रपाला समायान्तं चक्रमालोक्य वेगता तत्रागत्यागतो वीरशाग्रसत्सहसा बली चक्रं ग्रसितमालोक्य विष्णुपर्पुरञ्जय मुखं तस्य परामृज्य तमुद्रालितवान्मा स्वचक्रमादाय महानुभावशुक्रोप चातीव भवैक् भर्ता महाबली तैर्युयुधे प्रवीरे सङ्कृद्रानान् युद्धधारकोऽस्त्रे चक्रे महारणं विष्णुस्ते सार्धं युयुधे मुदा नानायुद्धानि संक्षिप्य तुमुलं भीमविक्रमम् अथ ते भैरवादाक्ष युयुधुस्तेन भूरिशा नानास्त्राणि विमुच्यन्त संकृता परमोजसा इत्थं तेषां रणं दृष्ट्वा हरिणा तुल्यतेजसा विनिवृत्य समागम्य तान् स्वयं युयुधे बली अथो विष्णुर्महातेजा शक्रमुद्यमूर्छिता युयुधे भगवांस्तेन वीरभद्रेण माधवा तयोः सम्भवदुदं संघोर रोमहर्षणं महावीराब्धिपत्योस्तु नानास्त्रधरयोर्मुने विष्णुयोगबलात्तस्य देहादेव सुदारुणा शङ्खचक्रागदाहस्ता असङ्ख्या चातक्ष
जज्ञिरे ते चापि युयुधुस्तेन वीरभद्रेण भाषता विष्णुवदल्लभन्तो हि नानायुद्धरागना तान् सर्वानपि वीरोऽसो नारायण सम्प्रभान् भस्मी चकार शूलेन हत्वा स्मृत्वा शिवं प्रभुं ततक्षरसि तं विष्णु लीलयैव रणाजिरे जघान वीरभद्रो हि त्रिशूलेन महाबली तेन घातेन सहसा विहता पुरुषोत्तमा पपात च तदा भूमौ विसंज्ञो भूनमुने हरे ततो जज्ञेदु तं तेजा प्रलयानलसन्निभं त्रैलोक्यदाहकं तीव्रं वीरनराणामपि भीकरं क्रोधरक्तेक्षण श्रीमान् पुनरुत्थाय स प्रभु प्रहर्तु चक्रमुद्मय रातिष्ठत् पुरुषर्भः तस्य चक्रं महारौद्रं कालादित्यसम्प्रभं व्यष्टम्भ्यदत् दीनात्मा वीरभद्र शिव प्रभु मुने शम्भो प्रभावातु मायेशस्य महाप्रभो न चचाल हरे शक्रं करस्थं स्तम्भितं ध्रुवम् अथ विष्णुर्गणेशेन वीरभद्रेण भाषता अथिष्ठ सत्यं भतस्तेन शृङ्गवानेव निक्षला ततो विष्णुस्तं सतम्भितो हि वीरभद्रेण नारदा यज्ञवोपमन्त्रन् मनं निस्सतम्भन् करं जपन् तथा सतम्भन् निर्मुक्तं शाङ्गधन्वारमेश्वरा शार्गं जग्रासकौत्रा स्वधुना संशरमुने त्रिभिक्षधक्षितं पान स्तेन शार्गं धनुर्हरे वीरभद्रेण तत्तात त्रिधदा भूतक्त क्षणान्मने अथ महावाण्या बोधितस्तं महागणम् सर्वर्चसं ज्ञात्वा हान्तधार्तुं मनो ददे ज्ञात्वा च सर्वमिदं भविष्यं सती कृतं दुष्प्रसहं परेषां गतास्वलोकं स्वगना निवातास्तु स्मृत्वा शिवं सर्वपतिं स्वतन्त्रम् तन्त्रं सत्यलोकगतक्षाहं पुत्रशोकेन पीडिता अचिन्तय सुदुःखार्तो मया कार्यमदवये विष्णुमयी गते चैव देवाक्ष मुनिभिः सह विनिर्जिता गणे सर्वे ये ते यज्ञोपजीवना तं पुत्रव मालक्ष्य विद्धवस्तं च महामखं मृगस्वरूपो यज्ञो हि महाभीतोऽपि दुद्रुवे तं तदा मृगरूपेण धावन्तं गगनं प्रति वीरभद्रसमादाय विशीर्षसकमथाकरोत् तथा प्रजापतिं धर्म कश्यपं च प्रगृहस अरिष्टनेमिनं वीरो बहुपुत्रं मुनीश्वरम् मुनिमङ्गीरसं चैव कृक्षाचं च महागणा जघानमूर्ध्नर्पादेन दत्तं च मुनिपुङ्गवं सरस्वत्याक्षनासाग्रं देवमातुस्तथैव च चिच्छेदयेद करजाग्रेण वीरभद्रप्रतापवान् ततोऽनन्यानपि देवादीनविरदाय पृथ्वीतले पातयामास सोऽयं वै कुरोधाक्रान्ता तिलोचना वीरभद्रो विदार्यापि देवान् मुख्यान् मुनीनपि नाभूच्छान्तो धृत्क्रोधफनिर्राडेव मण्डिता वीरभद्रो दधृताराति केसरीव वन द्वीपान् दिशो विलोकयामास काकुत्रास्तीत् यनुक्षणं व्ययपोथय यद्भृगुं यावनं मणिभृत् प्रतापवान् भद्राकं योरसि तदा काशीतच्च मुक्षलोचनं चण्डश्रोतपाट्यामास्फुशनो दन्तान् प्रवेगता शप्यमाने हरे पूर्वो यो हसदृश्यन्तदा नन्दिभग्यस्य नेत्रे हि पातितस्य रुषा भुवि उच्चार दक्ष्मक्षणाय शपन्तमस्सु सूचता विडिम्बता स्वधा तत्र सा स्वाहा
दक्षिणा तथा मन्त्रासन् तत्रास्तथा चान्ये तत्र तथा गन्नायके विवर्षुसते पुरीक्षानि वितानाग्रोरुषागना अनिवाच्यं तदा चक्रुगना वीरास्तं ध्वरम अन्तर्वेद्यन्तरं गतं नीलनं तद्दयादलात् आनीनाय समाज्ञाय वीरभद्रे स्वभूतसुतं कपोलेस्य गृहीत्वा तं खडेगानापहृतं शिरा अभेद्यं भवतस्य तच्च योगप्रभावता अभेद्यं तच्छिरो मत्वा शस्त्रा सत्रैक्षुतु सर्वशाकरेण त्रोटयामास पद्मयामाक्रमय चोरसी तच्छिरस्तस्य दुष्टस्य दक्षस्य हरवैरिणा अग्निकुण्डे प्रचिक्षेप वीरभद्रो गणाग्रणी रेजे तदा वीरभद्रस्त्रीशूलं भ्रामयन् करे क्रुधारन्नाक्षन् संवर्ता प्रज्वाल्य पर्वतोपमा अनायासेन हत्वैतान् वीरभद्रस्ततो गिनना ज्वालायामास सक्रोधो दीप्ताग्निशलभानिवा वीरभद्रस्ततो दग्धान् दृष्ट्वा दक्षपुरोगमान् अट्टहासमकरोत् पूरयक्षं जगत्त्रयं वीरशिक्षावृतस्तत्र ततो नन्दन सम्भवा पुष्पवृष्टिभूर्दिव्या वीरभद्रे गणान्विते बभुर्गन्धवः शीता सुगन्धा सुखदाशने देवदुन्दुभयो नेदु सम्मेव ततः परं कैलासं स ययो वीरा कृतकार्यस्ततः परं विनाशितदृढध्वान्तो भानुमानेव सत्वरं कृत्कार्यं वीरभद्रं दृष्ट्वा सन्तुष्टमानसा शम्भुर्वीरगणाध्यक्षं चकार परमेश्वरा इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सति खण्डे यज्ञविध्वंसवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः।